Okay, guys, last time we were talking about different research strategies, and we discussed experiment, action research, grounded theory, survey research, ethnography, case study, and archival research, right? And we discussed benefits, advantages and disadvantages, merits and demerits of each type of research strategy, right? Now we are moving forward, and we are going to see whether we can use multiple research strategies at the same time. Can we use different techniques of data collection? Can we combine them, right? Is it better to use one technique, or is it better? Can we also use multiple techniques at the same time, right? So in this session, we would look at the we're going to combine, different research methods or research tools. So if you look at this graph, that pretty much summarizes how we can combine different research methods. So we've got research choices here. We have two major choices. One is mono method. Mono means one, right? So that is one single method research, single method data collection, right? For example, you decided to do a research and you decide to conduct research using surveys, right? So that is, since you are using single method to collect data, that would be mono method research. Or you decide to collect data through qualitative interviews, that would still be mono method. Or you decide to collect data through observations or structured observations, right? So it would still be classed as mono method, right? However, mono method definitely is generally the most used research choice. Generally, it is too complicated to combine more than one method, right? So generally, researchers would go for mono method, right? Because there are time limitations, there are limitations of resources, you do not have enough funds, right? Especially for the PhD students or MS students or undergrad students, they have to complete their projects within a given time. So if they decide to go for multiple methods, it might not work for them. Reason is that it might require a lot of time, right? So that is why most of the student projects, they use mono method, right? Single method. However, we need to understand sometimes we want to increase the rigor of the research. We want to, use different other techniques to validate our data, to confirm our data, right? So in that case, we may go for a different method, which is called different choice, which is multiple method. That means using more than one method, right? Now, within multiple method domain, we've got a multi-method research, or we've got mixed method, right? So multi-method is when we are using different methods of data collection within the same major category. So we've got two major categories: qualitative data and quantitative data, right? So if we go for multi-method, what we do, we use multi-method quantitative data collection tools. For example, we can use the quantitative data from the records of the company, as well as we can also ask question from, we can also have survey, quantitative survey from employees. Example is, you want to explore whether employees, those who are
who believe are motivated, or those who are highly satisfied with their jobs, and resultantly they are performing high, do they also have high performance in the annual evaluation document, right? So in that case, what we would do, we can conduct a survey. We can ask them if they are satisfied with the organization and whether that leads to higher performance or not. At the same time, we can also confirm this data by going through the company annual evaluation records that that would objectively record the performance of different employees. So we can compare different sets of data so that we know there's no bias. There's less bias, and more than one method of data collection confirms each other, right? Similarly, we can use multi methods in the qualitative studies. We can use multi-method in the qualitative studies. For example, we can conduct a focus group as well as in-depth qualitative interviews. So findings may reinforce each other, right? We can use qualitative interviews as well as field observations, right? So one type of research, one types of data collection method is going to reinforce, either confirm or refute the findings of other method, right? Now, if you look at these, for example, qualitative methods, what we do basically, because in the qualitative research especially, there's a possibility of a lot of bias, because people's opinion, their subjective subjective account is basically being studied, right? So in that case, since there's possibility, people might not be reporting findings very accurately. We validate it with a different method, right? Now, so then comes the next one, which is mixed method, right? So within multiple methods, we have multi-method, which is using different data collection techniques within the same major category, which is like qualitative, either quantitative or qualitative. So we are using two quantitative methods or two qualitative methods. But in mixed method research, we use different techniques together. We can mix quantitative and qualitative, right? We can mix different forms, different other forms, right? So if we look at this mixed method research, mixed method is we've got mixed methods, which is simple one, and then the complex one. We discuss one by one. There's also a box that explains in your book on the box 5.2, right? That is focus on student research, how you can use multi-method qualitative studies. I would recommend go through this this box very carefully, right? Now, since we've got so in the mixed method research, what we do, we combine both qualitative as well as quantitative studies, right? For example, we start with qualitative study just to explore different factors
involved in a study, right? And then we move on and based on the concepts or the variables we have explored in the qualitative part, we then move on and we conduct a quantitative study. So mixed method research may involve both quantitative as well as qualitative data, right? Um, there are different types of mixing, right? When it comes to qualitative or quantitative, right? Um, and I'm going to tell you, different. I'm going to show you a diagram here. So we've got if you look at this diagram, different diagram in a different text. So if you look at this, we've got different methods of mixing here. So one is concurrent, qualitative and quantitative, both both types of research methods, they are done at the same time. For example, we want to explore relationship between two variables, and but there are also some open-ended questions to explore if there is any other variable involved. So we concurrently means at the same time, right? So we would conduct both, we would use both methods at the same time, quantitative as well as qualitative. For example, we want to explore the impact of emotional, family-oriented advertisements on consumer buying behavior. So in this case, we may collect data quantitatively, as well as we might also ask what are the other things that triggers you to buy a particular product, right? So we are, in this case, we are using both qualitative method and quantitative method at the same time. So they are to complement each other. One part can be studied using quantitative method, while the other part can be used to study the qualitative part can be studied can be used to study other part, right? So we call it triangulation, when we are using more than one method at the same time, right? The second one is sequential exploratory. Sequential exploratory means it is in the sequence, but the sequence is exploratory. Exploratory means first we conduct qualitative method. Through qualitative method, we try to explore the relevant variables. And once we know what are the relevant variables through a qualitative study, through qualitative interviews, through qualitative methodologies, then we finalize our research framework for quantitative methods, right? So first we conduct qualitative method study, right? For example, we do not know what exactly are the problems faced by students during COVID-19. So first we would conduct a qualitative method. We can ask students, do you feel comfortable studying at home? Is online teaching effective? What kind of problems do you face? So we might only think that the student's problem is only because students tell teacher, sorry, I cannot connect with the internet. So the teacher believes the only problem is probably
the internet connection. However, there could be number of other problems. There might not be a quiet room available at home. There might not be, your family member may not be supportive. They might not understand that the student is taking a class and it's a serious business. There might be other distractions, right? The routine does not fit with the class timings and the class schedule. The student's routine does not fit with the class schedule. So there could be number of other possibilities. There might be the student might have to take care of somebody who is not feeling well at home, right? So there could be number of other factors. So through qualitative research, we try to first explore those factors. That's why we call it sequential exploratory, right? So we try to explore those methods, those problems through qualitative method. And then we realize that these are the three problems that are most important and they are going to impact student performance in the exam, right? So based on that, we finalize that there are three factors. For example, factor number one is the the quality of internet. Factor number two, family support. Factor three, online teaching methodology. And these three things may affect the student's interest and student performance. So we create a quantitative framework after we have explored the relevant variables in the qualitative methods, right? So this is the case of sequential exploratory research. Okay, the other one is sequential explanatory. Explanatory means the one which explains. We need qualitative research in this case to explain the quantitative results. You might understand this. We conduct a survey research. We assumed that online teaching might lead to low performance. We assumed that, right? And we conducted a study on this. However, our results of the quantitative method shows that actually the online teaching is not affecting performance negatively. Rather, students' performance increased in case of online classes. So in that case, these results are since these results are unexpected, right? The current or existing theory does not, existing literature does not effectively define this. We cannot understand why is it happening. For example, we may say if the bosses are bad, salaries are low, people are likely to leave the organization, right? Turnover. So we assume based on theory, we make a quantitative framework and we say the abusive supervision, if supervisor is bad, वो बेइज्जती वगैरह करता रहता है, लोगों को डांटता रहता है, the supervisor is not abusive and the pay salaries are low. तो दोनों चीजें असली हैं which would create demotivation and dissatisfaction. So दोनों चीजें जो है would lead to dissatisfaction, and when people would be dissatisfied, they would leave the job. अब आपके पास रिजल्ट जो आते हैं उससे पता चलता है कि अगरचे लोगों ने कहा हमारा सुपरवाइजर जो है वो बड़ा बुरा आदमी है एंड द सैलरीज आर वेरी लो, स्टिल पीपल, जब उन्हें पूछा गया कि आपने ये जॉब छोड़नी है या नहीं, most people said we do not want to leave the job. Now that is a tricky situation. I mean, it goes against the theory. Theory says if people are dissatisfied, if people are, the working conditions are not good, people are likely, or they would like to leave the organization. अब इस केस में हमें पता चला है कि जनाब वो तो लोग छोड़ना नहीं चाहते. अब हमें ये एक पजल सॉल्व करने के लिए we need to conduct a follow-up qualitative study, qualitative interviews. अब हम दोबारा उन लोगों के पास जाएंगे, उन्हें कहेंगे जी आप डिससेटिस्फाइड हैं, वो कहेंगे डिससेटिस्फाइड है. भाई आप क्यों नहीं छोड़ना चाहते? वो कहते हैं जी हम जिस शहर में रहते हैं इधर यही 2-3 ऑप्शंस हैं, एक ही बड़ी फैक्ट्री, अगरचे सैलरीज कम है लेकिन इसके अलावा हमें कोई और जॉब ऑप्शन नहीं है.
क्या एक बंदा कहता है जी मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मैं अपने बच्चों की केयर करती हूँ, ठीक है, मेरे लिए दूर जाना पॉसिबल नहीं. सो यू वुड एक्सप्लोर why there are contradictory results, why there are strange results that we've got in the quantitative method. So in this case, quantitative method is followed by qualitative methods, right? Okay, so we call this process, in the mixed method, we call it triangulation. So we can use qualitative and quantitative methods in a concurrent way at the same time, or it can be sequential exploratory, or it can be sequential explanatory, right? Okay, so moving on to the last one, which is sequential multi-phase. So in this case, we start with the qualitative method, we explore different factors, and based on that, we build a framework of quantitative methods, right? Once we've got the quantitative results, we still feel there are things that need further explanation, and that is why we need to conduct another phase of qualitative method. So qualitative followed by quantitative, and then again followed by qualitative method. This is pretty complex. Normally students at undergrad level, because of their time restrictions, they would not go for such complex model, right? So anyway, these are the different options in the mixed method research design, right? Okay, so now we've got, I would say, do read this box 3 in your book, which is focus on student research using mixed method research, right? And there are different options written here: initial, exploratory, how you're going to do in-depth interviews, focus stage, right? So I would recommend do read it. Now, why do we use the mixed method design? There are a number of reasons, right? Some of them we've already talked about. I've given you examples, but we'll discuss again in a more systematic way. First one is initiation. Initial use of qualitative or quantitative methodology may be used to define the nature and scope of sequential, qualitative or quantitative research. राइट, ये मैंने आपको भी बताया कि शुरू में हमें प्रॉब्लम के बारे में क्लैरिटी नहीं होती. जस्ट टू इनिशियल यूज हम करते हैं, थोड़ी सी क्वालिटेटिव या थोड़ी सी क्वांटिटेटिव कर ली और फिर उसके बाद मेन स्टडी की तरफ चले जाते हैं. दूसरी ऑप्शन ये है कि फैसिलिटेशन, जिसे हम कहते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिसर्च वन मेथड मे लीड टू डिस्कवरी ऑफ न्यू इनसाइट. अब आपने शुरू किया काम और आपको अंदाजा हुआ नहीं यार मुझे मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर मैं दूसरा मेथड भी साथ यूज करूंगा तो मुझे फर्दर इंफॉर्मेशन मिल सकती है. कई दफ़ा आप कॉम्प्लीमेंट करने के लिए या इंटरप्रेट करने के लिए दूसरा मेथड यूज कर लेते हैं. इंटरप्रेट की मैं आपको एग्जांपल दी. कई दफ़ा आपको कई अनएक्सप्लेन्ड चीज़ें होती हैं, आपने क्वांटिटेटिव स्टडी की लेकिन आपको समझ नहीं आ रही किसे एक्सप्लेन कैसे करें, ठीक है, तो इसके लिए फिर आप क्वालिटेटिव इंटरव्यूज कर लेते हैं. तो लोग आपको बताते हैं कि यार ये वजह थी, मैं इधर से छोड़ के नहीं जा रहा, वरना मैंने जॉब छोड़ जानी थी, है मैं डिससेटिस्फाइड यहाँ से, राइट. Similarly, using more than one method, using mixed method may also help to establish generalizability of the study or its relative importance. In a similar way, the use of mixed method may also help to establish the credibility of study to produce more complete knowledge. For example, आपने qualitative study की है. Qualitative study में remember you cannot conduct interviews from 200 people. It's impossible. It's very time consuming, right? So we conduct interviews, let's say from 7 to 10 people, right? And one might say, look, you only conducted this research on 7 people, although they told you interesting stories, interesting, very rich qualitative data is obtained. However, it's not generalizable. We cannot apply on others. We're not sure whether this would apply to other situations or not. So in order to enhance generalizability, we might do a follow-up quantitative study, and quantitative study I already
discussed in the last lecture that we can collect a large amount of data in the quantitative study, right? So in this case, generalizability would be increased, right? There are similar other reasons. I'm not going into detail. For example, diversity, use of mixed method may allow greater diversity of views, right? सिर्फ आपके पास वो टिक मार्क ओपिनियन नहीं आती, बल्कि आप क्वालिटेटिव की तरफ जाते हैं, आपके पास बहुत सारी स्टोरीज का आपको पता चलता है, ठीक है? Problem solving, which is use of alternative method to help find initial method, if there are any unexplainable results. I've already talked about this, right? Or if there's insufficient data, we may bridge up the gap with other method, right? So these are different reasons why we do quantitative and qualitative studies together, right? Coming back to the slide. Let me open the slide again. So we know we have got different choices. We can go for mono method, we can go for multi methods. Within multi methods, multiple methods. There are multi methods studies and there are mixed method studies, right? We've already talked about this triangulation, facilitation, complementary role of research, interpretation, and solving a puzzle. I've talked about these different methods, right? Now moving on to time horizons. अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि मैं इस वक्त आपसे पूछूं कि जनाब आपका सुपरवाइजर अच्छा है या बुरा, आप सबके मैं लेट्स से मैं आपको कहूं कि आपका टीचर अच्छा है या नहीं, ठीक है ना? जरा स्टूडेंट से रिलेट करते हैं और आप समझते हैं कि टीचर नहीं ठीक, मेथड नहीं अच्छा पढ़ाने का, लेकिन एट द सेम टाइम आपसे पूछा जाए कि कॉन्सेप्ट्स कैसा है, सेटिस्फैक्शन विद द कॉन्सेप्ट्स। अब इत्तेफाक अगर ये हुआ, आजकल स्टूडेंट्स ने ट्विटर पे ट्रेंड चलाया हुआ है कि हमारी फ़ी कम करें, हैं स्टूडेंट कॉन्सेप्ट रिड्यूस आर फी, तो कॉन्सेप्ट ने आपको खुशखबरी ताज़ा भेजी है कि जनाब आपकी फ़ी कम होगी। अब आपसे पूछते हैं कॉन्सेप्ट अच्छा है कि नहीं, आप कहते हैं बहुत अच्छा। अब कई दफ़ा इसलिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब है एक ही वक्त में सारे वेरिएबल्स का डेटा आप इकट्ठा करते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज मींस we collect data relating to different variables at the same time, at one point in time, right? अब आप कहते हैं कि जनाब अगरचे टीचिंग मेथोडोलॉजी भी अच्छी नहीं है, आप कहते हैं जनाब फैसिलिटीज भी नहीं ठीक, लेट्स से कुछ लोग हैं, और लेकिन उसके बावजूद कॉन्सेप्ट सेटिस्फाइड हैं, और आपसे पूछे आप इधर ही रहना चाहते हैं, कहते हैं इधर ही रहना चाहते हैं, यहीं से MBA करना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ से करना चाहते हैं, अंडरग्रेड के बाद हम इधर। अब ये कई दफ़ा ऐसे होते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में प्रॉब्लम ये होता है कि आप वी आर नॉट श्योर इफ द कॉज इज रियली व्हाट यू नो, वेदर द independent variable we are using the real cause of change in the dependent variable, ठीक है? एक और आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप हम अज्यूम करते हैं कि हम एक सर्वे करने जाएं और उस वक्त लोगों को ताज़ा बोनस मिला। अब आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनसे पूछते हैं कि वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, वो शायद सारी चीज़ों में बहुत अच्छा रिस्पांस दें कि वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा है, हम यहाँ पे खुश है, ताज़ा बोनस मिला है, उसका इफेक्ट होगा। लेकिन अगर हम वाकई देखना चाहते हैं कि आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट का एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन पे क्या इन्फ्लुएंस है, तो असूलन ऐसा होना चाहिए कि आज जो हमने वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में उनकी ओपिनियन ली है, वो 6 महीने बाद देखें कि वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। यानी हम एक फेज़ में डेटा इकट्ठा ना करें, क्योंकि एक फेज़ में डेटा इकट्ठा करने का मतलब ये है कि क्योंकि हम एक स्टडी में मैक्सिमम कितने वेरिएबल्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3, 4, 5, 6 वेरिएबल्स के बारे में पूछ लेंगे। They are because we are in in the social sciences, we cannot control everything. It is not like lab experiments. We cannot control everything.
right? So that is why there might be number of factors, जिसमें हमने अभी last lecture में discuss किया था, confounding variable. There might be number of confounding variables. रिलेशनशिप नजर आ रहा है कि जहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा, एम्प्लॉयज ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे. हो सकता है ये ठीक ना हो रिलेशनशिप, ठीक है. हो सकता है उस वक्त कोई ऐसा वाकया हो गया हो इंडस्ट्री में, बाकी कोविड-19 आया, बाकी लोगों ने अपने एम्प्लॉय निकाल दिया, आपकी कंपनी ने नहीं निकाला, इस वजह से आप सेटिस्फाइड हैं. हो सकता है इसका ताल्लुक जो है ना कंपनी की पॉलिसी, जनरल पॉलिसी से ना हो. इसलिए एक जब वक्त में आप डेटा इकट्ठा करते हैं, क्रॉस सेक्शनल डेटा इकट्ठा करते हैं, क्रॉस सेक्शनल डेटा कैन नेवर प्रूव द कॉज़ैलिटी. It does not prove cause and effect relationship. We are not sure whether the effect we see on the dependent variable it is caused by the independent variable. Although हम ये कहते ही हैं कि लगता है कि इसकी वजह से हुआ है, ठीक है, there's a correlation, right? However, we cannot establish causality. ठीक है, इसलिए जो बहुत अच्छे जर्नल्स होते हैं, जब पे स्टडीज पब्लिश होती हैं, जब आप उधर क्रॉस सेक्शनल डेटा भेजें तो वो उस पर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि यार एक बंदा एक दिन अच्छे मूड में था, उस दिन उससे पूछा कि बॉस कैसा है, उसने कहा बॉस भी अच्छा है. उससे उसी दिन पूछा कि ना ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसने कहा वो भी अच्छी है. आप कमिटेड हैं, वो कहता है मैं भी कमिटेड हूँ. तो एक ही वक्त में डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो एक कई दफ़ा मूड का भी इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयज़ के, कई दफ़ा एक सिचुएशन ऐसी आई होती है कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिससे एम्प्लॉयज़ खुश हैं, ठीक है. कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप तो कोई यानी ऑफ टाइम होने वाला, आपकी छुट्टियां होने वाली हैं, आप हैप्पी मूड में हैं, ठीक है. इस वजह से क्रॉस सेक्शनल स्टडीज एग्जैक्टली कॉज़ैलिटी प्रूव नहीं करती. उसके मुकाबले में हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, राइट. लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज कौन सी होती हैं? जिसमें लॉन्गिट्यूडनल डेटा मीन वी कलेक्ट डेटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. Let's say we collected data today about one variable, and then we collect data on dependent variable maybe 6 months later, and then we, using the statistical analysis, statistical techniques, we try to see whether there's relationship between independent variable and dependent variable or not. So longitudinal studies, because data is collected data is collected at different points in time. That is why we are more confident that the results or the findings are more accurate compared with the cross-sectional studies, right? So now question is, obviously we can see longitudinal studies are better. Then why don't we always conduct longitudinal studies? The reason is our capacity. We cannot always, longitudinal studies are very difficult to conduct. It's very difficult to conduct longitudinal, you know, you have to collect data from the same participant second time. So sometimes it's not possible. For example, आज आप बैंक में गए हैं, उधर you find some people, you requested them, they filled the questionnaire. आप उन्हें आखिर में कहते हैं अपना नाम लिखते हैं, मैंने दोबारा, वो कहता है भाई मैं तो नाम नहीं लिखना, मेरा नाम कहीं डिस्क्लोज ही ना हो जाए, मैंने तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बुरी बातें की है क्वेश्चनेयर में. अब आपके पास नाम होगा तो आप उसका रिकॉर्ड रखेंगे, क्योंकि आपने दोनों सेट्स जो हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल फेज 1 में डेटा इकट्ठा करते हैं, फेज 2 में डेटा इकट्ठा करते हैं, या वेव 1, वेव 2, वेव 3 में, आपने उनको सारे लोग, यानी वो हर बंदा, एक बंदा जिसने फेज 1 में कलेक्ट डेटा दिया है या फेज 2 में डेटा दिया है, आपने उनको रिलेट करना आपस में, ठीक है. ये नहीं हो सकता कि आपने फेज 1 में लेट्स से अंजुम से डेटा फिल करवाया और फेज 2 में आप कहें कि अंजुम नहीं मिला तो चलो जो ना शफीक से करवा लें या फौजिया से करवा लें. दैट इज नॉट पॉसिबल. इट डजंट वर्क लाइक दैट. सो क्योंकि आपने जिस बंदे से इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेटा फिल करवाया, उसी बंदे से देखना है ना कि उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल उसका कैसा है, ठीक है. वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में उसका क्या हाल था, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो जॉब सेटिस्फेक्शन या टर्नओवर इंटेंशन है उसके बारे में उसका क्या ओपिनियन है. सो you have to collect data from the same person.
right? Since you have to collect data from the same person, that is why it is it is very difficult to locate that person, right? Locate the questionnaires filled by person in both phases. फिर ये कि 2 दफ़ा डेटा कलेक्ट करने में आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, आपको टाइम ज़्यादा चाहिए, ठीक है, उसका एनालिसिस मुश्किल है, इसलिए बहुत लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ कई दफ़ा स्टूडेंट्स अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स में इनकॉर्पोरेट नहीं करते, दे रादर गो फॉर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, राइट? Although cross-sectional studies have limitations, but then, you know, we also have to look at the feasibility, whether this longitudinal study is feasible or not. If it is not feasible, we cannot do, we would go for cross-sectional studies, right? Okay, so let's move on. Credibility of research findings. So we have to look at reliability, validity, and generalizability of research findings, right? So reliability, generalizability, and validity, right? When we say reliability, okay, one more thing I would like to tell you before we move on, right? हम ये कह रहे हैं क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों स्टडीज में जब आप क्वांटिटेटिव स्टडीज करते हैं उसमें आप हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं. You must have studied hypothesis, null hypothesis, and alternative hypothesis in your data analysis or statistics course. लेकिन मैं आपको सिर्फ गाइडलाइन के लिए मैं आपको बता देता हूँ. We'll discuss more in the chapter 7, right? So hypothesis ये है क्या होता है? Hypothesis is an assumption, right? Hypothesis is an assumption that we are going to test. For example, हम ये कहते हैं customer service training is going to improve customer satisfaction. तो ये hypothesis है, ठीक है. हम एक वेरिएबल है customer service training, दूसरा है customer satisfaction. हम देखते हैं कि जब हम customer service training बढ़ा दें एम्प्लॉइज के दरमियान क्या उससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ती है या नहीं. इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस, राइट? सो reliability, validity, and generalizability, right? So when it comes to reliability, that is there are different threats to reliability. Reliability का मतलब ये है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं जो क्या वो रेप्लिकेशन है. यू नो, रिलायबिलिटी का मतलब है कि रेप्लिकेशन, कंसिस्टेंसी. अगर आप एग्जिस्टिंग रिसर्च डिज़ाइन जो है रेप्लिकेट कर सकते हैं, दोबारा ये कर सकते हैं और वो सिमिलर रिजल्ट्स आए, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि रिसर्च रिलायबल है. इसकी हम टेक्निक्स में इंशाल्लाह चैप्टर 8 में जाके पढ़ेंगे कि हम रिलायबिलिटी कैसे टेस्ट करते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हम डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि रिलायबिलिटी का क्या मतलब है. सो अगर एक रिसर्च डिज़ाइन जो है रेप्लिकेबल है, दोबारा इसे हम रिपीट कर सकते हैं, तो ये रिलायबल रिसर्च है, ठीक है. वैलिडिटी का मतलब है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मेजर्स यूज्ड. फॉर एग्जांपल, मैं जो मेजर यूज़ करता हूँ हैप्पीनेस को टेस्ट करने के लिए, मैं देखता हूँ कि जनाब वो बंदा मुस्कुरा रहा है कि नहीं. तब हो सकता है मेजर ठीक ना हो, मुस्कुराता रहो लेकिन वो दिल उसका ज़ख्मी हो, है. वो होता है ना, वो कहते हैं कि होंठों पे मुस्कुराहट और दिल जख्मों से चूर.
अब पॉसिबिलिटी है कि द मेजर वी आर यूजिंग इज नॉट राइट वन। आप कहते हैं कि जनाब मैंने उससे पूछा कि वो स्ट्रेस्ड है कि नहीं, उससे मैंने पूछा इसलिए कि आप पे काम का बर्डन है, वो कहता है बहुत बर्डन, तो इससे आपने ज्यूम कर लिया कि वो बंदा बड़े स्ट्रेस में है। हो सकता है वो काम की वजह से स्ट्रेस ही ना होता हो। तो वैलिडिटी का मतलब यह है कि आपने जो मेजर्स यूज कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, मेजरमेंट वैलिडिटी है कि नहीं। ठीक है, इस पे भी हम इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन करेंगे रिलायबिलिटी पे और वैलिडिटी पे। पहले मैं आपको कुछ रिलायबिलिटी के बारे में बता दूं कि रिलायबिलिटी को कैसे, रिलायबिलिटी को व्हाट आर द थ्रेट्स टू रिलायबिलिटी, राइट? दे आर गिवन in table 5.3 of your book, right? And that is on page number 203, right? So you can have a look at page 203, threats to reliability. Number one threat. I share screen with you, a different screen, right? So if you look at this, now threats to reliability include number one, participant error. यानी दो एरर्स यहाँ पे लिखे हैं रिसर्चर के पार्ट पे, एक एरर पार्टिसिपेंट की एरर और पार्टिसिपेंट का बायस। दूसरा ये है कि रिसर्चर की एरर और रिसर्चर्स बायस, राइट? सो पार्टिसिपेंट एरर मींस कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि participant adversely alters the way in which participant perform. Example, asking participant to complete questionnaire just before lunch break. अब पार्टिसिपेंट जो है जल्दी जल्दी उसने खाना खाने जाना है, या वो किसी से उसके मुलाकात का वक्त है और उसने उधर पहुंचना है, या उसने किसी शादी पे जाना है और आप उसी वक्त, या किसी ने आप मॉल पे, शॉपिंग मॉल में आप रोक के उसे पूछना चाहते हैं, मार्केटिंग के बारे में सर्वे करना चाहते हैं, और उसने मुश्किल से अपने हस्बैंड को या बीवी को मनाया मुझे फलां चीज़ ले दो, है, या बच्चे ने वो माँ को मनाया। अब इस केस में जब रश में होगा तो वो डेफिनेटली अप्रोप्रिएटली जो है ना क्वेश्चन फिल नहीं करेगा, जल्दी जल्दी में फिल करेगा, और इस तरह उसमें पार्टिसिपेंट की वजह से एरर्स हैं। दूसरा है पार्टिसिपेंट बायस, यानी इस केस में तो ये है कि उसे पता नहीं चलता, वो जल्दी में और जो उसके जी में आता है वो फिल कर देता। दूसरी चीज़ ये है कि एनी फैक्टर विच इंड्यूस अ फॉल्स रिस्पॉन्स, जानबूझ के पार्टिसिपेंट बायस हो जाए। इसलिए वो इस तरह हो सकता है कि आप क्लास के सामने आप एक रिसर्च स्टडी करने जाएं और आप टीचर से इजाज़त लें कि जनाब मुझे इस क्लास से डेटा इकट्ठा करना है, और लोगों को कहें कि जनाब आपने ये बताना है कि आप ऑनलाइन टीचिंग से या मुतमईन थे या नहीं, या आप आर यू हैप्पी विद योर क्लास टीचर और नॉट, और ये आप उन्हें कह दें कि ये क्वेश्चन ये जो ना बाद में अपने टीचर को दे दीजिएगा, इनसे मैं कलेक्ट कर लूँगा। तो ऑब्वियसली जब आपको पता हो कि यार ये डिस्क्लोज हो जाएगा, ये अदर पीपल वुड नो व्हाट इज़ माय ओपिनियन, राइट, आपके बायस आ जाएगा, सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस, आप वो इंफॉर्मेशन फिल करेंगे जो आप समझेंगे कि लोगों की नज़रों में आप बुरे ना लगे, right? So which does not let you down in eyes of others, right? So that is participant bias. So participant error, which is error because you don't know, you're filling it wrong. You are simply making error because you are in rush. और बायस ये है कि आप किसी वजह से आप समझते हैं कि यार अगर मैंने ठीक रिस्पॉन्सेज दिए तो ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए पार्टिसिपेंट बायस। अब आपने रिसर्चर के तौर पे इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने कभी भी ऐसे डेटा इकट्ठा नहीं करना जिससे employs with the data collection method which is prone to participant error or participant bias। फिर रिसर्चर के पार्ट पे भी बायस हो सकते हैं, जो अब जाहिर है अगर बायसेस होंगे तो रिलायबिलिटी नहीं रहेगी। दूसरा ये है कि रिसर्चर एरर, any factor which alters researcher's interpretation. For example, researchers may be tired or not sufficiently prepared and misunderstood some of the subtle meanings of his interview. Especially interviews में जब आप researcher थका हुआ है तो वो obviously उसने गलत समझ लिया। दूसरा ये है कि biases researcher के भी होते हैं, वो खुद से आप वो चीज़ सुनना चाहता है वो जो प्रूव करना चाहता है, इसलिए आपसे क्वेश्चंस इस तरह के पूछ रहा है कि जिससे पता ये चले वो पार्टिसिपेंट उसी तरफ, मसलन उसे कहते हैं यार ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बुरी तो नहीं है ना, इतनी तो ना खराब,
अब ज़ाहिर है बंदा कहता है यार नहीं इतनी बुरी तो नहीं है, तो अब ये ऑलरेडी लोडेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये रिसर्चर के बायस की वजह से रिलायबिलिटी अफेक्ट होगी, ठीक है। दूसरे हम बात करते हैं थ्रेट्स टू वैलिडिटी, राइट। अब वैलिडिटी दो तरह की है, एक हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी, राइट, और दूसरे को हम कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब रिलायबिलिटी का हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि रिसर्च क्वालिटी रिलायबिलिटी से डेफिनेटली अफेक्ट होती है। लेकिन अगर हम रिलायबिलिटी अचीव भी कर लें तो ज़रूरी नहीं कि रिसर्च वैलिड। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक कॉजल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया, फॉर एग्जांपल लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स, there you go। तो रिलायबिलिटी का हमने डिस्कशन कर ली कि लेकिन अगर हम रिलायबिलिटी की बात कर भी लें, जब तक आपकी स्टडी वैलिड नहीं होगी उसमें आपने वही चीज़ें मेजर की हैं जो आपको मेजर करनी चाहिए, जो आपने मेजर्स यूज़ किए हैं वो एक्यूरेटली मेजर कर रही हैं, ठीक है, तो उस वक्त तक आपकी स्टडी जो है वो बहुत अच्छी स्टडी नहीं समझी जाएगी, राइट। सो मेजरमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, इसकी डिटेल भी दी हुई है आपके सेक्शन 11.4 बुक का सेक्शन है 11.4, इस पे इसकी डिटेल्स दी हुई हैं। सॉरी नॉट, हाँ 11 पॉइंट जो फर्दर इसमें हम डिस्कशन है, इसमें हम इंशाल्लाह वैलिडिटी पे बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे हम चैप्टर 11 में भी, ठीक है। इस स्टेज पे मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आपने ये पहले तो प्रूव करना है इंटरनल वैलिडिटी, दो तरह की वैलिडिटी, एक है इंटरनल वैलिडिटी, दूसरी को हम कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी क्या है? जब आपने ये एस्टैब्लिश करना हो कि whether your research accurately demonstrates the causal relationship between two variables, ठीक है, जो वेरिएबल कॉजल रिलेशनशिप आ रहा है क्या वो वाकई ठीक है या नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दी थी कि वो चर्चेज, अगर ज़्यादा जिन शहरों में चर्च में लोग ज़्यादा जाते थे वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो बार्स में और पब्स में भी लोग ज़्यादा जाते हैं, तो अब ये वैलिड रिसर्च नहीं थी क्योंकि वो जो रिलेशनशिप था कॉजल रिलेशनशिप ये एक्चुअली ठीक नहीं था। उससे ये उन्होंने ये ड्रॉ किया कि जनाब कॉजलिटी लीड्स टू सॉरी द चर्च अटेंडेंस लीड्स टू attendance in the bars, which was right, which was not right. So internal validity ये है कि जब दो variables का causal relationship जो है वो accurately demonstrate करें, ठीक है। अच्छा, so questionnaire हम experiments में भी और questionnaire में भी, questionnaire based survey में भी internal validity उस वक्त establish होगी जब हम ये कहते हैं कि जो हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है, आउटकम वेरिएबल्स, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ठीक रिलेशनशिप है, वही है जो हमने मेजर की, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। अच्छा, दूसरा एरिया है, अब इंटरनल वैलिडिटी को भी बहुत सारे थ्रेट्स हैं। फॉर एग्जांपल पास्ट और रीसेंट इवेंट्स, ये मैंने अभी आपको बता रहा था कि रीसेंट इवेंट कोई हुआ है और रिलेशनशिप असल में था लेकिन पास्ट इवेंट की वजह से ख़राब हो गया, उसका रिलेशनशिप नहीं आ रहा। आपने पहले से वही टेस्ट किया है, थोड़ी देर पहले कुछ अर्सा पहले वही रिसर्च की थी, लोग आदी हो गए उस रिसर्च की, उस वजह से वो ठीक जवाब नहीं दे रहे। थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी, राइट। इसी तरह कई दफ़ा कुछ ऐसी वजह हुई हैं कि पार्टिसिपेंट्स को ये थ्रेट दिया गया कि आपने सर्वे फिल नहीं करना, वो उसकी वजह से उन्होंने ये जो विथड्रॉ कर लिया है।
survey से, that would also be a threat to internal validity. Second one is external validity, right? So external validity is concerned with the question, can a study's research finding be generalized to other relevant settings or groups? For example, एक मैनेजर अगर ये पूछे कि can the findings of from the research study in one organization in a corporation be used to inform policy and practices in other organization in the group? एक 5-6 कंपनियों का एक ग्रुप है, एक कंपनी में उन्होंने स्टडी किया है, क्या वो दूसरी जगह पे अप्लाई हो सकती है या नहीं? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपने जो स्टडी किया वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो सकती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी सब्सिडरीज के फाइनेंस डिपार्टमेंट में अप्लाई हो सकती है या नहीं? ठीक है, क्या ये उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट, हमारी सारे ग्रुप की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है या नहीं? ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि एक्सटर्नल वैलिडिटी विच इज लिंक्ड विद द जनरलाइजेबिलिटी, राइट? सो this part, external validity, is linked with the generalizability, right? Remember, you have to consider ethics while doing any research. The research design should not be subject should not subject the research population to embarrassment, harm or any material disadvantage. आपने लोगों से सर्वे फिल करवाए हैं और आपने उन्हीं के बॉसेस को जाके दिखा दिए कि देखें जी लोग तो आपके बारे में बड़ी बुरी बातें कहते हैं, ऑब्वियसली उससे एम्प्लॉयज़ का नुकसान होगा, उनकी जॉब जा सकती है। आपने इसकी डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना है, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि किसी तरह से लोग एम्बेरस ना हो, कहीं पे उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे, उनकी जॉब को ना नुकसान पहुँचे, उनकी हेल्थ को नुकसान ना पहुँचे, उन्हें कोई फिजिकल डिसएडवांटेज ना हो, कोई मटेरियल उनकी सैलरी में या इंक्रीमेंट ना ख़राब हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपनी फेयर ओपिनियन दे रहे हैं। यू मस्ट consider ethics when you are doing your research, right? So here's the summary of research. We've got strategies, choices, time horizons. We've already talked, I repeated everything a couple of times so that similarly research project can be categorized as exploratory, descriptive, or explanatory. As far as the research project's timeline is concerned, it could be cross-sectional or longitudinal, right? So at the end, you should understand that the main research strategies may combine in the same project. Opportunities provided by using multiple research methods may be used. We must consider validity and reliability of the results, and we must ensure that the research we are conducting, it meets the ethical parameters. For example, अगर आप किसी को कहते हैं आपने रिकॉर्डिंग करनी है इंटरव्यूज की और आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप उससे पूछ के करें, ठीक है, कॉन्सेंट लें कि मैंने आपकी रिकॉर्ड करनी है। अगर आप रिसर्च हमेशा एथिकल वे में आपको करनी चाहिए, ठीक है जी। That's all about chapter number 5. So what you have to do now, you need to start thinking about your research project. What sort of research design is suitable for your own research, right? That your research project that you are going to conduct. So we'll have discussion on this now about what sort of research design is suitable to students for their semester project, right? So I'm stopping the recording here and we can discuss further about this, right?